हमारा जो पहला टॉपिक था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस है। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस। डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस में हमारा ये थर्ड लेक्चर की हमारी कोर्स आउटलाइन है। इस डिजाइनिंग ऑफ सिंथेसिस में इट कंसिस्ट ऑफ 5 units or 5 lectures. Designing of synthesis reactions should be in mind. Guideline for good disconnections, symmetry, recognizable starting materials, available compounds. Some uh, guideline 1, guideline 2, guideline 3, guideline 4, guideline 5, guideline 6, linear and convergent synthesis. Now, this is the lecture. We are going to discuss designing of synthesis. Reactions should be in mind. There are two topics will be covered in this lecture. Designing of synthesis 1. The title of this lecture, Designing of synthesis 1, first lecture. Designing of synthesis, how will you design the synthesis? Definitely, it is based on retrosynthesis. First, you will analyze the compound, then you will plan of synthesis. Analysis. What is analysis? Analysis in retrosynthesis, the disconnection approach, recognize the functional group in the target molecule. This is the key step. These are the key steps or key points by which you can design a synthesis of the given target molecule. Analysis recognize the functional group in the target molecule. Second important point, disconnect with non-reliable reactions in mind. Disconnect with non-reliable reactions in mind. If you have any reaction in your mind, then you will disconnect. Otherwise, you will not. You will you do not disconnect the molecule. Repeat as necessary to find available starting materials. Repeat as necessary to find available starting materials. Okay, repetitions. नए नए मॉलिक्यूल्स पे आप नहीं जाएं बल्कि कोशिश करें कि सिमिलर मॉलिक्यूल will be generated. What are the key points in synthesis? Write out the plan, adding reagents and conditions. First, you will make the plan, adding reagents and condition, what type of reagent are required and which type of conditions will be required. Modify the plan according to unexpected failures or success in the laboratory. Okay. Uh, Unexpected failures क्या हो सकते हैं? Then you will modify the plan. क्या successful synthesis हो सकती है लेबॉर्ट्री में और ज़्यादा, तो उसमें modify plan आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हमने plan कर लिया तो वो modify नहीं होगा, बल्कि regarding the conditions, the availability, you can modify your plan of synthesis. Essential background knowledge. क्या नॉलेज आपके होनी चाहिए जब आप कोई सिंथेसिस करने जा रहे हैं, कोई रेट्रो सिंथेसिस करने जा रहे हैं? एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म शुड बी क्लियर। और वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलायबल रिएक्शंस पता हों और उनकी मैकेनिज्म क्लियर हों। एंड अप्रिसिएशन दैट सम कंपाउंड आर readily अवेलेबल। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी क्या है कंपाउंड्स की, आपको पता हो कि जो कंपाउंड्स आपको चाहिए उनकी क्या अवेलेबिलिटी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होनी भी ज़रूरी है कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कोई स्टीरियो सेटर्स तो नहीं है कंपाउंड में, कोई स्टीरियो केमिकल रिएक्शंस तो नहीं है उसमें, कोई स्टीरियो आइसोमर्स तो जनरेट नहीं हो रहे। तो ये भी हमें नॉलेज पता होनी। बेसिक केमिस्ट्री शुड बी रिवाइज। हमारी बेसिक केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए ताकि हमें बेसिक चीज़ें पता हों।
Reactions should be in mind. कुछ रिएक्शंस यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं कि ये बेसिक रिएक्शंस हैं, ये हमें हमारे माइंड में होनी चाहिए ताकि हम अपनी रेट्रोसिंथेसिस को सक्सेसफुल कर सकें और फिर सिंथेसिस प्लान जो है वो हमारा एक फ्रूटफुल है और प्लान है. तो रिएक्शन शुड बी इन माइंड. नंबर वन, Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction क्या है? This is used in cyclization. This is the in the Diels-Alder reaction, diene is present in which two double bond, alternative two double bond, diene and dienophile. Dienophile, the double bond is present. We search the diene, so this is the dienophile, and this diene and dienophile react and form an adduct, cyclohexene. Second is nucleophilic addition of carbonyl compounds. So carbonyl compounds in aldehyde and ketone, they give nucleophilic addition because this carbon is electrophilic in nature due to this polar C double bond O. So this carbon is electrophilic in nature and double bond move towards single bond by nucleophilic addition. So these carbonyl various reagents in which nucleophiles are present, they can react with this carbonyl, cyanide attack on this carbon, and this is alkoxy group and hydroxy group. So different type of product will be obtained. Nucleophilic addition and elimination of carbonyl compounds. Nucleophilic addition भी हो रही है और elimination भी हो रही है. Usually the removal of water molecule. This is the hydrazine reaction from hydrazone, phenylhydrazine addition and removal of water molecule, then phenylhydrazone will be obtained 2,4-dinitrophenylhydrazine, then 2,4-dinitrophenylhydrazone will be obtained. This is semi-carbazide react and form semi-carbazone. This is amine. Primary amine react with carbonyl compound. In result, we will obtain imine. This is the imine. And this is the secondary amine react with carbonyl compound form N-amine. So this is very important product. Imine or an amine, they are intermediate. They are not important, but they are intermediate of any important target molecule. And a big range is available of imine and amine. And they are the protecting groups as well as intermediate. They are highly stable. So this primary amine react with carbonyl form imine and secondary amine react with carbonyl compound form N-amine. Number four, reactions of alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide is a very good reagent, and by using alkyl magnesium halide, you can obtain various type of compound of different classes. Alkyl magnesium halide react with formaldehyde from primary alcohol, with acetaldehyde from secondary alcohol, react with ketone from tertiary alcohol. Three type of alcohol you can obtain by using alkyl magnesium halide. Similarly, by ester react with ester from ketone, react with carbon dioxide from carboxylic acid, react with alkyl halide from alkane, you can increase the carbon chain, and react with alcohol from alkane. So different type of compound you can obtain alcohol, ketone, acid, alkane by using alkyl magnesium halide, a very well known compound, usually known as Grignard reagent. The next is the fifth, dehydration of alcohol into alkene. Dehydration of alcohol into alkene. This is a very important reaction. Dehydration in presence of sulfuric acid, you can obtain double bond. Wittig reaction is also very important. Triphenyl phosphine react with alkyl halide. In result, yellage is obtained. Phosphorus yellate. Phosphorus yellate react with carbonyl compound and double bond
alkene will be obtained. Number seven, electrophilic substitution of benzene. It is also very important reaction. It should be in mind in the synthesis or retrosynthesis. The benzene react with nitric acid and sulfuric acid, nitrating reagent. Nitration will be occur. Sulfur trioxide and sulfuric acid, sulfonation, chlorine and ammonium chloride, halogenation. You can use here bromine and iodine as well. Alkyl halide and ferric chloride, Lewis acid alkylation, Frederick-Kraft alkylation, acyl chloride, ferric chloride, which is Frederick-Kraft acylation. So these reactions are very important, commonly used in synthesis. The next is electrophilic addition of alkene. It is also very common. Alkene react with different type of reagents and single bond will be obtained. Hydrogen and palladium, uh, single bond. Alkane is obtained. Chlorine, the vicinal dichloride. HCl, alkyl halide is obtained. Water in presence of sulfuric acid alcohol, you will obtain and oxidation, hydrogen peroxide and diol is formed. This is the reaction of potassium permanganate by which you can check the unsaturation in your compound unsaturation test. And this is the sulfuric acid. This is alkane sulfonic group, and hydrogen cyanide is hydrogen cyanide group. Acid derivative formation. The acid derivative formation, carboxylic acid form different type of derivatives. They are very important uh, in the synthesis. Ammonia react with carboxylic acid form amide, and alcohol react with carboxylic acid form ester. SOCl2, it is the chlorinating agent. Phosphorus trichloride, phosphorus tribromide, pentachloride, uh, phosphorus tribromide, they are halogenating agent, and those groups which are not easily removed, you can introduce halide uh, in, in the by replacing this group. So they are very strong halogenating agent. So it is converted into acid chloride, and sodium acetate react with carboxylic acid form anhydride. So these are the derivatives of acid, anhydride, acid chloride, ester, and amide you can obtain, and by simple acidic hydrolysis they are converted into carboxylic acid. So they are also used as protecting groups. Then acid derivative react with water in presence of acidic medium. The acid obtained again. Next, oxidation. Alcohol oxidize in presence of any oxidizing agent, potassium permanganate, potassium dichromate, in presence of concentrated sulfuric acid and chromium oxide, converted into aldehyde, and aldehyde further oxidized into carboxylic acid. Similar fashion of reduction, the acid is converted into aldehyde by using any suitable reducing agent, lithium aluminum tetrahydride, and aldehyde or dibyl H. And aldehyde is converted into alcohol by using lithium aluminum tetrahydride, sodium boron tetrahydride, dibyl H. Substitution. Uh, Nucleophilic substitution or halogenating agents, alcohol react with SOCl2 form alkyl halide, and the alkyl halide, any type of nucleophile can react with alkyl halide, and this is the SN mechanism. The halide is replaced with the attacking nucleophile. So these reactions should be in mind. Then if you have these reactions in mind, you can design best route of synthesis using retrosynthesis.
और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ये कुछ मेन रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं, बहुत कॉमन से रिएक्शन हैं। तो मेन रिएक्शन भी बहुत सारे हैं। एल्डो रिएक्शन है, माइकल रिएक्शन है, और क्लेमेंसन रिडक्शन है, कुछ वेरी वेल नॉन main reactions. Enolate anion है, enolate anion is formed by aldehyde and ketone। और फिर उसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अल्फा पोजीशंस के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द अल्फा पोजीशन ऑफ aldehyde and ketone। तो इनोलेट एनाइन के बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं। तो दे आर द बेसिक रिएक्शंस, और दे शुड बी इन माइंड इन द प्लान ऑफ synthesis by using retrosynthesis। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट की थी, तो मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट प्लान जो है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह भी नमाज के बाद हम करते हैं, और जो थोड़ा सा ज़्यादा आगे की चीज़ें होंगी। यहाँ तक कोई बात डिस्कस करनी है, कोई पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग। सर जो आपने दूसरी तीसरी स्लाइड में अडक्ट पढ़ाया, तो अडक्ट के मीनिंग यहाँ पे क्लास का नाम है या कंपाउंड का सिर्फ? ये एडक्ट का मतलब तो ये होता है कि कोई दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना, उसको एडक्ट कह देते हैं, कह सकते हैं। कोई भी ठीक दो है चीज़ें जो ऐड ठीक हो रही हैं उनको एडक्ट कह देते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। और थैंक कोई यू। बात, कोई सवाल करना चाहें? ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी, थोड़ा सा रिवीजन हो गई होगी कि अच्छा भाई ये सारे रिएक्शन होते हैं। कुछ मैंने और बता दिया आपको, एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, माइकल रिएक्शन है। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन मुख्तलिफ तरह से की होती हैं, रिडक्शन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो ये थोड़े से हमें याद होनी चाहिए चीज़ें, तो हम एक अच्छी साइंथिसिस कर सकते हैं। जितने अच्छे हमारे रिएक्शंस के ऊपर हमारी कमांड होगी, तो यू कैन परफॉर्म अ गुड साइंथिसिस एंड यू विल बी अ गुड सिंथेटिक केमिस्ट। ठीक है, नमाज के बाद हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ठीक है, मौजूद ओके से सर। शुक्रिया।